Yes, good morning, everyone. Okay, so in the last class we were discussing heap sort, right? We have seen what a heap is. Heap is your complete binary tree firstly, and means all the levels should be completely filled except the last level. And then we have seen that heap are of two types. First is your max heap, in which the root element will always be greater than its descendants. Okay, the root will be greater than its descendants. और इसके नीचे के tree से भी the root will always be greater. Root node or parent node will always be greater than its descendants. This is your max heap. The reverse of this is min heap. Then we have seen how to insert in a max heap. Okay, till insertion, I think we have done. Let's suppose this is your max heap 50, 30, 20, 15, 10, 8, and 16. Suppose this is a max heap. Okay, I want to insert something here. Suppose you want to insert 60. So in max heap, you will always enter at the last location. Okay, here the last location is this, the left child of 15. So you will enter always at the last location, and then you will compare whatever you have inserted with its parent, and you will keep on comparing and moving the newly inserted node upwards. So that's why the time complexity was order of log to insert, right? Because in the worst case you have to move till the height of the tree, and finally 60 will reach here. Okay, this is insertion. I think till this point we have discussed. We haven't discussed deletion yet, right? Yeah. Now deletion. So suppose the same tree we have 50, 30, 20, 15, 10, 8, 60. Now in a max heap, if you want to delete anything, only the root node will be deleted. Why the root node will be deleted? Because in a max heap, if this is my heap, where is my highest, where is the element which is having the highest value? सबसे highest और maximum value वाला element कहाँ पे रखा हुआ है? Root पे ही है, right? Suppose this is a pile of apples like this. You will not take any apple from in between. If I'm saying you that the best quality apple is at the top, you will always and obviously take that. Okay. So generally we create max heap because a max heap will always give you the maximum element at the root node itself. यहीं पे maximum element रखा होता है हमेशा. So that's why whenever you want to perform deletion, only root node will be deleted from the max heap every time. You don't have any option. You cannot delete any other element. Okay, only root node will be deleted. Okay, so we have to delete the root node, that is 50. So first delete 50. The root node will be deleted. 50 will be removed from here. Currently the array was something like this, right? Array representation of heap 50, 30, 20, 15, 10, 8, 16. 50 was deleted. Now what do you think? What should go up if 50 is deleted? अब 30 यहाँ जाएगा. If 30 will move here, what will happen to 15 and 10 then? एक left child, एक right child. What will happen to them? जो अभी किया था insertion में, you have to do the reverse of that. नहीं, 15 मूव करोगे तो 10, how can 10 become the child of 15? अंशा, 15 और 10 तो भाई बहन है ना, they are siblings. 15 cannot become parent of 10. So जो अभी किया था insertion में, what we did in insertion, whenever you wanted to insert any element, you inserted at the leaf node or the last node, right? Last location पे insert किया था. Now here in this heap, currently in this heap, which is my last element, सबसे आखिरी element कौन सा है? 16, right? So in deletion, whenever the root node is deleted, the last element, जो भी last element होगा, that will move to the top. Last element root की जगह जाके बैठ जाएगा. Now in insertion, we have inserted at the last location and then we moved that element upwards.
यहाँ पे उल्टा करें, यहाँ पे लास्ट लोकेशन टॉप पे आ गया है, whatever your last element is, now that element is at the top, now you will move that element downwards deletion में. Okay, same काम करना है, you have to compare it with the siblings and you have to move it downwards. So when 16 is compared with 30 and 20, कौन सा greater है? 30 greater है, so 30 will move up, 16 will move down, like this, right? 30 will move up. Again you compare 16 with its children, both the children are less than 16, so 16 will stay there as it is. Okay, this is how. ऐसा नहीं है कि 15 cannot become the parent of 10 or anything like that, but just always remember कि whenever you are performing insertion, you have to insert at the last location, that is leaf node, जो भी last location होगी, and then you have to move that upwards by comparing with the parents. Whenever you're performing deletion, obviously always the root node will be deleted, and whatever is the last element, that will move upwards. वो root की जगह चला जाएगा directly, that will directly move towards the root, and then it will start moving downwards whenever you're performing deletion. Now if you see, now this is again my max heap, and again the maximum value is at the top, right? जो भी maximum possible value है वो सीधा सीधा top पे है. Again if you want to delete 30, suppose from here I want to delete 30, I want to delete 30, so 30 will be deleted, delete 30, and which element will go at the place of 30? 30 की जगह क्या जाएगा? 8, right? Now in this heap, which is the last element? Last element ये 8 है ना? 8 is the last element, so 8 will move in place of 30, 8 will go there. Okay, then again you start moving 8 downwards. First you compare 8 with its children 16 and 20, कौन सा greater है? 20, so 20 चला जाएगा 8 की जगह, 20 will move here, 8 will come here. अब 8 का कोई भी children नहीं है, so we will stop here. Okay, now this is my max heap. Again the maximum possible value, that was 20, is at the root level. This is how you have to perform deletions. Okay, any doubts? Now ये पढ़ क्यों रहे हम लोग? Why we are reading these insertions and deletions? Because our main topic is heap sort. We have to read heap sorting, how to do the heap sorting. In a very short while you will understand why we are doing this. So this was my original array. Array नहीं, heap 50, 30, max heap 20, here it was 8, here it was 60. Okay, what is the size of this heap? Size क्या है इस heap का? Size मतलब how many elements you have? 1 2 3 4 5 6 7, right? So 1 2 3 4 5 6 7, you have 7 elements. 1 2 3 4 5 6 7, right? 50 is here, then 30, 20, 15, 10, 8 and 16, right? Suppose first I deleted 50, I deleted 50, तो 50 यहाँ से delete हो गया. Last element, that is 16, it will move here, then we will compare 16 with its children, so 30 will move there and 16 will come down, so 16 will be here, 30 will be here, right? Now what is the current situation of my array representation of heap? 50 तो delete हो चुका है, 30 is at the root, 30 का left child is 16, 30 का right child is 20, then 15, then 10 and 8, and this last place will be empty. Yes or no? The current situation after deleting 50 looks something like this in the array format. True? Obviously one space will be blank because 50 delete हो चुका है, right? One space will be blank because 50 delete हो चुका है. What I'm thinking is, I have deleted 50 and I have a blank space in my array now. I will use this blank space. I will do nothing, just put 50 there. My heap is still this point only. Now my heap is still this point only. So एक खाली space बची थी, so I will utilize that. That's it. Okay. एक खाली space बची थी, जो element delete किया था उसको उठा के वहां पे रख दिया. That's it. Suppose I delete 30 now. Obviously I don't have any option. You have to delete 30 only because this is the root node. So 30 will be deleted. The last element, that is 8, will reach here.
we will compare 8 with its children, so 20 will go there, 8 will go here when you perform 30. So now the current situation of heap looks 20 is your root node, 20 ka left child is 16, 20 ka right child is 8, then 15, then 10, and obviously this space will be blank because 30 is deleted. Now my heap is still this point only. अब heap इतना ही बचा है. There are only 5 elements in the heap. I have a blank space. So whatever element I have deleted 30, I will keep 30 in the blank space. Similarly, next time you perform delete operation, that is 20 will be deleted. फिर एक blank space create होगी and I will put 20 here. Again you perform the delete operation. So with your next highest element, that is 16, that will be deleted and I will put 16 here. Again I will perform the delete operation. जो भी next possible element है, क्या है next possible element? 15. That will be deleted and I will put 15 here. Again you perform the delete operation. इस point पे अगर current situation ये है array की, heap इतना ही मेरा, बाकी तो सारी blank spaces थी, right? Heap इतना ही, तो अभी heap कुछ ऐसा दिख रहा होगा. 8 और 10 खाली बचे in heap, right? So 10 obviously will become the root node और 8 बचेगा, right? Again I will perform the delete operation. 10 will be deleted. I will put 10 in the blank space. फिर एक element बचेगा 8. Again I will perform the delete operation and I will put 8 here. And this is what is known as heap sorting. This is sorted, right? This is sorted in ascending order. यहाँ से यहाँ तक. We haven't done anything. What we have done? We have just created a max heap and we have performed the deletion operation. हर deletion operation मुझे max heap में highest element दे रहा है उस वक्त का. I'm just placing that highest element in the blank spaces. That's it. Okay. So in a short, what is a heap sort? Heap sort involves 2 steps. Okay. If you want to perform heap sort or anything, you have to do 2 things. First, you have to create a heap. एक मैक्स हीप बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने सबसे पहले इंसर्शन पढ़ा है. You have to create a max heap. If you want to sort in ascending order, you have to create max heap. If you want to sort in descending order, you have to create min heap. But generally we are not very concerned with min heap, okay? Because if this is a pile of apples, I want the best possible apple, not the worst possible apple. Okay, so best हमेशा top पे होगा. अगर min heap करोगे तो worst possible apple will be on the top, right? Minimum value will be on the top. So it depends sometimes that you might have to use min heap also, but generally we are concerned with max heap only. So whenever you want to perform heap sort, the first step is you have to create that max heap, and the second step is you have to keep on deleting the elements from the max heap. सारे के सारे element delete कर देना है max heap से. That's it. These 2 steps are there to perform heap sort. Deletion का time कितना लगेगा? What is the time for the deletion? Insertion के लिए time हमने देखा order of log n लग रहा है, because you have to insert the element and then you have to move it upwards. How much time for deletion? कोई एलिमेंट हीप सॉर्ट से 50 को डिलीट करने में कितना टाइम लगा? n log. देखो 50 को डिलीट करने में तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम ही लगा. डिलीट करने में कितना टाइम लगा? रूट पे रखा था, उठा दिया. पहला एलिमेंट तो हमेशा 50 हमें पता ही है, पहला 50 इज ऑलवेज एट द फर्स्ट लोकेशन, तो 50 को डिलीट करने में तो ऑर्डर ऑफ 1 लगा. लेकिन 50 को डिलीट करने के बाद हमें एडजस्ट भी करना पड़ा ना मैक्स हीप. लीफ नोड को लाके लगाना पड़ा टॉप पे, फिर लीफ नोड को नीचे मूव करना पड़ा पूरा का पूरा. उसमें भी तो कुछ टाइम लगेगा. कितना टाइम लगेगा? जितनी हाइट है ट्री की. अगेन when leaf node reach the top location, you have to move that leaf node downwards also ना. उसमें कितना टाइम लगेगा? जितनी इसकी हाइट है, that is log n. So overall log n again. Okay, insertion के लिए भी order of log n, deletion के लिए भी order of log n. Now let's see a full example. Okay, पूरा heap sorting का ये, हाँ वो ठीक है, तब n log n लगेगा. You are right कुमार. ओके, अभी हम देखेंगे जब पूरा हीप सॉर्टिंग पे आएंगे तो इंसर्शन में भी n log n लगेगा कुमार, है ना, क्योंकि एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का टाइम वाज log n. अगर आपको n एलिमेंट्स इंसर्ट करने, सो इट विल बी n log n. सिमिलरली विद डिलीशन आल्सो. ओके, बट सिंपल डिलीशन, डिलीट वन एलिमेंट, टाइम इज log n. एक एलिमेंट को डिलीट करने का तो log n ही लग रहा है ना. नाउ सपोज लेट्स सी हीप सॉर्ट कंप्लीटली व्हाटएवर वी हैव रेड टिल नाउ. ओके, सपोज अब क्वेश्चन क्या होता है? दिस इज अ सॉर्टिंग
टेक्निक यू आर रीडिंग, राइट। और सॉर्टिंग कैसे करनी होती है, एक एरे ऑफ एलिमेंट्स दिया जाता है, यू आर गिवन अ एरे ऑफ एलिमेंट्स, सपोज 8 10 15 16 20 30 50, सपोज आई हैव गिवन, ये तो पहले सॉर्टेड दे दिया मैंने, सपोज 10 20 15 ठीक, 30 40, ये ले लेते चलो। सपोज आई हैव अ एरे ऑफ एलिमेंट्स लाइक दिस, राइट, दिस इज नॉट सॉर्टेड, राइट, 15 यहाँ पे 20 यहाँ पे, दिस इज नॉट सॉर्टेड, you have to perform heap sort on this array and you have to sort it out, okay, you have to sort all the elements of this array, this is your question। अब कैसे करेंगे heap sort के लिए I've told you have two steps, first you have to insert, you have to create a max heap, ये तो array है ना, ये तो array of elements है, this is not heap right now, you have to create a max heap first, and the second step is you have to delete all the elements of that max heap, these two steps you have to do in order to perform heap sorting। so first step is let's create the max heap, okay, कैसे create करेंगे, 1 2 3 4 5, okay, that same insertion algorithm you have to perform 4 5। so what I'm going to do is the first element is 10, so it will be inserted at the root position, right now I have only one element in the heap, that is 10, ठीक है, तो इसमें और कुछ कर नहीं सकते। the next element is 20, so 20 जो भी अब कहाँ इंसर्ट होगा 20, the next element is 20 and current situation of heap is this, कहाँ इंसर्ट होगा 20, insertion algorithm क्या बोलता है, where you have to insert the element at the last location, remember in a max heap you always insert at the last location, फिर उसको ऊपर मूव करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लास्ट लोकेशन, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ 10, दिस इज द लास्ट लोकेशन, तो 20 आके यहाँ पे हो गया, एंड देन आफ्टर इंसर्शन यू कंपेयर 20 विद द पेरेंट, मूव 20 अपवर्ड्स, ऐसे करते हैं इंसर्शन, सो व्हेन 20 विल बी कंपेयर्ड विद 10, 20 will be the parent and 10 will become its left child, right, और array में ये move कर जाएंगे, 20 will come here and 10 will come here, so till 20 I have inserted। next is 15, I want to insert 15, 15 कहाँ insert होगा, at the last location, last location क्या है, last location is right child of, नहीं last location 10 का left कैसे है कार्तिक, remember this is a complete binary tree, every node should be completely filled and you have to insert from left to right, यहाँ पे देखो ना array में देखो दिख रहा है, that's why I'm making the array representation also, the last location is this 3 index, 3 index पे आएगा 15, 3 index क्या है, 3 index is the left child of, 3 index is the right child of 20, 2 into I plus 1, 10 is the left child of 20, 2 into I, that is 2, 3 is the right child of 20, that is 2 into 1 plus 1, okay, so 15 आएगा यहाँ पे, then again you compare 15 with its parent, obviously 15 is at the correct position, so you don't have to do anything, 15 सही जगह पे है। next is 30, so 30 will be inserted at the last location, that is this 4, ये कौन सी लोकेशन है, obviously 10 का left child है, 30 is the left child of 10, right, again you start comparing 30 with its parent and you keep on moving upwards, so when 30 will be compared with 10, 30 will move here, 10 will move down, again 30 will be compared with its parent, ऊपर मूव करते जाना जब तक हो सकता है, so 30 will move at the top and 20 will move down, 30 will be here, 20 will be here, so the current situation of my array representation of heap looks like this, 30 is the root node, 20 is the left child, 15 is the right child, 10 is the left child, now the last element is remaining, that is 40, so where will 40 be inserted, last location, that is 5, अभी 5 किसकी लोकेशन है, 2 into 2 plus 1 मतलब 20 का राइट चाइल्ड है, यहां से भी पता चल सकता है और यहां दिख भी रहा है, the next element is 20 का right child, that is 40, again you compare 40 with its parent and you keep on moving 40 upwards, so 40 first will be compared with 20, 20 will come down, 40 will go up, again 40 will be compared with its parent, से parent से compare करना, 40 will be compared with its parent, that is 30, so again 40 will move up, 30 will move down, 30 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, so current heap looks like this, 40 is the root node, 30 is the left child of 40, then 15, then 10, then 20,
Got it? So this is my max heap which I have created. कितना टाइम लगा क्रिएट करने में? एक एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए वी हैव सीन वी टेक लॉग एन टाइम टू इंसर्ट वन एलिमेंट. यहाँ पे कितने एलिमेंट इंसर्ट करने पड़ रहे हैं? एन एलिमेंट्स. 5 एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, तो 5 इंटू लॉग एन और n इंटू लॉग एन. सो द फर्स्ट स्टेप इज डन, दैट वी हैव क्रिएटेड द मैक्स हीप. कोई दिक्कत? अभी काम खत्म नहीं हुआ. वी हैव टू परफॉर्म द हीप सॉर्ट, राइट? हीप सॉर्ट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स. फर्स्ट यू हैव टू डिलीट, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट द मैक्स हीप, एंड देन द सेकंड स्टेप इज what is the second step? What is step 2? You have to delete all the elements from the max heap. Okay, so अब delete करना शुरू करो. Obviously don't have any option, always the root node will be deleted. So first here the 40 will be deleted. Again let's make the array. So this is 1 2 3 4 5, right? So first 40 will be deleted. So 40 delete karo. Which element will go in place of 40? The last element. Last element कौन सा है? 20. So 20 will go in place of 40. We will compare 20 with its children. अब 20 को नीचे लेके आना है deletion में. Okay. In insertion you have to make the element go upwards. In deletion you have to make the element go downwards. So when 20 will be compared with its children, 30 greater at 20 से, so 30 will move in place of 20 and 20 will come down. Right? Again 20 will be compared with his children. जब तक नीचे जा सकता है लेके जाना है. So when 20 will be compared with his children क्या होगा? 10 is less, right? So 10 will go. नहीं सही है. This is 10 छोटा है तो 10 नीचे रहेगा, right? So this is the current situation of my heap, and what has happened? 40 is deleted. So 40 को उठा के मैं जो last element है, जो last location है वहां पे रख दूंगा, right? Because heap is still this point only right now. यहाँ 30 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ 15 होगा, यहाँ 10 होगा in the array representation, right? ये last space खाली रह जाएगी because I have deleted 40. So 40 I will put at the last location. Again we will delete the next element, that is 30. So 30 will be deleted. वो last location पे जाके set होगा. So when 30 is deleted, which element will move upwards? The last element, that is 10. 10 is the last element. So 10 will move in place of 30. Then you start moving 10 downwards. 10 will be compared with its children. कौन सा सबसे बड़ा है? 20 बड़ा है, so 20 will move in place of 10. Right? So 20 will go here, 10 will come here. Now this is the max heap. Again you perform the delete operation. 20 will be deleted. Okay, so 20 को ले जाके जो खाली जगह है वहां पे रख दो. And when 20 is deleted, which element will move upwards? The last element. Which is the last element? 15. So 15 will become the root node now. 15 will become the root node now. Again you compare 15 with its children. सही जगह रखा हुआ है 15. Right? Again you perform the delete operation. 15 will be deleted. और 15 को जो खाली जगह बच गई वहां पे रख दो. कोई एलिमेंट बचा ही नहीं. 10 will be your root node. Okay. Now only 10 is in my heap. Okay. Current situation of heap is like this. I have only one element. That is this. Again you delete that element. So 10 will also be deleted. और जो भी खाली जगह है जो कि एक ही है वहां पे we will put 10. And this is how heap sorting is done. How much time to delete? एक एलिमेंट डिलीट करने के लिए log n टाइम लगता है. Here we are deleting 5 elements. So 5 into log n or n into log n. So to create a max heap, we took n log n time, and to delete all the elements of a heap, we took n log n again. So what is the time taken for heap sorting? पूरा का पूरा heap sort करने में कितना टाइम लगेगा? n log n plus n log n, that is 2 times n log n, or simply order of n log. This is the time taken to do heap sorting. कोई दिक्कत परेशानी? Any doubts? Clear everyone? Okay. So we have seen that to do heap sort, you will take order of n log n time. Now after the today's class, we try to implement heap sorting. ठीक है, घर पे खुद से करना because you don't have any lab as per now. So you try to implement heap sort. So whenever you will see its algorithm, ठीक है, recursive program use होता है, the algorithm is not big. People use a function known as heapify function. उसको देखना after the class you try to implement it.
people use a function known as heapify function. दो फंक्शन यूज करते हैं, एक फंक्शन होता है heapify, this is to create the heap, उसके बाद डिलीशन करते हैं. Now why this special name heapify? To create the heap. We know that in order to perform heap sorting, first you have to create a max heap and then you have to delete all the elements of the max heap. Now to create this max heap, they are using a function known as heapify. अब ये function क्या है and how it is different from how we have created the heap is, suppose I give you some elements like 10, 20, 15, 12, 40, 25 and 80, and I say you that you have to insert all these elements in the max heap. तो कैसे बनाओगे? You will take 10. This is my max heap right now. Then next element is 20. So 20 will be the left child of 10, right? Then you will move 20 upwards, comparing with its parent. So heap thoda sa transform. Okay, it will be like this. That 20 will be the parent and 10 will be the left child. Then the next element is 15. So वो last location पे जाके insert होगा. Then we will move it upwards. So यहाँ पे होगा नहीं upward move because it is at the correct position. The next element is 22. So 22 will be inserted at the last location, that is 10 ka left. Then we will compare 22 with parent and we will keep on moving it upwards. Yes or no? We are doing this. We are doing insertion like this. मतलब we are inserting at the last location and then we are moving the element upwards. इसकी वजह से time complexity आ रही है order of n log n, because in the worst case you have to move the elements to the full height of the tree. पूरा element move करना पड़ रहा है. The question is there any other way in which we can reduce the time complexity of this create function? जो n log n time ले रहा है to insert all the elements, क्या हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं? The result comes out that there is a function known as heapify which can do this. ठीक है, उससे बहुत पूरा एल्गोरिथम पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, but it reduces the time complexity of create function. कैसे? How this this heapify function works is, suppose this is the current situation. This is 12, so 22, 12, suppose 40, 25 and 80. Okay, this is the current situation. I want to make this a max heap. ठीक है, तो अब heapify क्या करेगा? He will not go in the upward direction. वो deletion जैसा काम करेगा. He will go in the downward direction. Okay, this is my ये बना हुआ है. Okay, इसको just make this in the array representation. इसमें इतना कुछ complicated नहीं है, बस just a thing you should keep in mind. Okay, it's not important that you have to write that heapify function only. How in whatever way we have read the insertion, you can write the coding in that way also. Okay, but whenever you will see heap sort function, generally people use this heapify function, though it's not going to make any significant difference in the overall algorithm's time. वो लगना ही order of n log n है real life में भी. Okay, but just it's mentioned, so let's see. So heapify जो function है वो deletion जैसा ही काम करेगा. It will go in the downward direction only. कैसे? वो लास्ट एलिमेंट लेगा, लास्ट एलिमेंट दैट इज 18. ठीक है, इट विल कंपेयर एवरी एलिमेंट विद इट्स चिल्ड्रन ओनली, जैसे डिलीशन काम करता है. You have to compare with the children and then you have to move it downwards. So in the same way, this heapify function जो कि creation of max heap है, this heapify function is used for creating a max heap. It will also work in the same way. Suppose the first element I take is 18. क्या इसका कोई children है? Is there any child of 18? No, right? We will not touch 18 right now. अगर इसका कोई child नहीं है, so just leave it. So 18 we will not touch. Next is 25. Again, you don't have any child for 25. You leave that. The next element is 40. Again, you don't have any child for that. You leave that. Next element is 12. There is no child of 12. You leave that. Now the next element is 15. Now you see. Next element is 15. What I will do is I will just compare 15 with its siblings. और मैं swap मार दूंगा. So I will compare 15 with its sibling, that is 25 and 18. और मुझे पता चला 25 is greater than 15. So 25 will move in place of 15, जैसे deletion में होता है, and 15 will move downwards. Okay, so मतलब यहां तक 12 तक हो चुका था, right? Which was the element here? 15, right? So 15 जाके 25 की जगह बैठ जाएगा and 25 will come and sit in place of 15 like this. Okay, so till this point everything is done. Till this point I have checked all the elements. The next element is 20. I will compare 20 with its children.
20 सही जगह पे है या नहीं है, नहीं है, राइट? आई विल कंपेयर 20 विद हिज चिल्ड्रन और 40 ग्रेटर है 20 से, सो आई विल स्वैप 20 विथ 40 डायरेक्टली, आई विल स्वैप 40 विथ 20 डायरेक्टली, 20 चला जाएगा यहाँ. नाउ दीज 4 elements are done and these 2 elements are done. The last element is this 10. So again 10 you have to compare with its sibling. Okay, so 40 greater है, so 40 10 की जगह आ जाएगा और 10 यहाँ चला जाएगा. Now this is a max heap. और यहाँ पे फर्क ये पड़ा है that I am not moving any element from the last location to the highest location. इतना ज्यादा worst movement नहीं करना पड़ा. In the worst case, if suppose this is my array from 1 to n, मुझे एक 18 को मूव करना है, तो वर्स्ट केस में मुझे कितना मूव करना पड़ा 18 को? I'm just swapping 18 with some variable. I'm just swapping this with something. I'm just swapping this with something. और वो array की limitation के अंदर ही. That is why this heapify function only takes order of n time. हाँ मतलब n एलिमेंट्स है ना, तो सब n को चेक कर, इसको चेक करने के लिए ऑर्डर ऑफ 1 ही लग रहा है स्वैप करने के लिए. तो स्वैप 1 एलिमेंट यू आर टेकिंग ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, तो टू स्वैप n एलिमेंट्स कितना टाइम लगेंगे? ऑर्डर ऑफ n टाइम, राइट? एक एलिमेंट को स्वैप करना है तो ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, n एलिमेंट्स को स्वैप करना है तो ऑर्डर ऑफ n लगेगा. एंड ओरिजिनली मेरा क्रिएट फंक्शन कितना ले रहा था? ऑर्डर ऑफ n log n, right? So there is a slight difference in the time, that is order of n from our previous create function which was taking order of n log n. Okay, so that's it. ठीक है, इसका implementation एक बार we try to do. Any doubts? So that's it regarding heap sort and all. Now we will start graphs. Okay, this is your last module. Graphs. So see, this is your last data structure which you have to see. Previously we were seeing trees, right? Tree was something like this. Tree was something like this. Okay, what is a graph is? A graph is simply a group of vertices and edges. A group of vertices and edges. मतलब I can say a graph belongs to something known as set of vertices and set of edges. I am saying set, mathematical set. Graph is a collection of vertices and edges. For example, suppose I create something like this. Simple example लेते हैं पहले. Suppose I create something like this. Okay, this node is known as A, this node is known as B, this node is known as C, this node is known as D. Okay, so set of vertices क्या है यहाँ पे? What is the set of vertices? A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex and D is a vertex. So जब इन सारी चीजों को एक साथ रख दोगे, when you will keep all these together, this is known as set of vertices. So A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex, D is a vertex. Now set of edges. Okay, suppose this is edge 1, this is edge 2, this is edge 3, this is edge 4. So what is the set of edges? Edge 1, edge 2, edge 3, edge 4, right? This is the set of edges. Yes or no? यही सारे edge हैं. From edge, what is the edge? Edge is a line connecting two vertex A, B. Edge is a line connecting two vertex A, D, D, C, B, C. क्या A और C के बीच में कोई edge है? Is there any edge between A and C? No, right? Now, suppose I'm talking about edge 1. So I can say edge 1 is nothing but connecting A and B. So I can write edge E1 like this also. Okay, that edge E is a unique form of something known as UV, जहाँ पे UA है और VB है. If suppose I'm talking about H2, I can say H2 कैसे बना हुआ है? H2 किसके बीच में बना हुआ है? उन दोनों वर्टेक्स को लिख दो एक साथ. H2 is made from B and C, right? H3 is made from D and C. Okay, so that's it. This is the meaning of vertices and edges. Now you see we have red trees, right? Tree में भी तो edge और vertices थे. In a tree also
I can say that this is my tree जिसमें A है, ये B है, this is C, this is D, this is E, this is F, this is G. इसमें भी वर्टिसेस हैं A B C D E F G H. इसमें भी एजेस हैं. ये एजेस ही तो थे ट्री के. ये एजेस ही तो थे. Yes or no? So if I'm only saying you that the graph is a collection of vertices and edges, it doesn't make a full sense. Because tree में भी वही था. Tree में भी you were having vertices and edges. So what is the basic difference between graphs and edges? Graphs and trees. Can you tell me? What do you think? What could be the basic difference between a tree and a graph? And we were discussing the very first or second class of data structures when I was teaching you linear and non-linear data structures. I've told you this difference there itself. Okay. But एक बहुत ही common सा difference है apart from this hierarchy and all. Not connected. We will say a graph can contain a cycle. A से शुरू करो और A पे ही घूम के वापस आ जाओ. It is possible. Right? In trees, this is not possible. In trees, you can never have a cycle. This is a very common difference between a tree and a graph. ट्री में if you are starting from A पे वापस नहीं आ सकते हो. यहां से चलना शुरू किया तो there is no cycle in a tree and there is a cycle in a graph. This is a very basic difference between a tree and a graph. Okay. Now let's see some of the terminologies. जैसे हमने ट्री में पढ़ी थी वैसे ही कुछ टर्म्स यहाँ पे भी पढ़ेंगे. We have to read some terms, then we have to read DFS and BFS, then we have to see adjacency matrix. वो implementation में आ जाता है. Hardly I think 2 classes it will take. Okay. Now let's first make a graph. और उसकी मदद से we will understand some of the terms. Suppose let's write all the vertices. So suppose this is vertex 1, node 1. This is another node. 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 Node means a vertex. So vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4, vertex 5. So 5 vertex I have in my graph. और edges कितने हैं? How many edges you have? Suppose this is edge. This is ये वर्टेक्स नहीं, यहाँ पे कोई वर्टेक्स नहीं, एक ही है, इसी पे घूम के आ रहा है. यस. ओके. सो अगर ये इसी पे घूम के आ रहा है तो ये एक ही एज होगा. यस और नो? ये दो एज नहीं होंगे, एक ही एज होगा, इसी पे घूम के आ रहा ना. सो सपोज दिस इज एज 1, दिस इज एज 2, सपोज दिस इज एज 3, दिस is edge 4, this is edge 5, this is edge 6 and this is edge 7. Suppose my graph looks something like this. Okay. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक वर्टेक्स था, V1 से V3 के बीच में इस तरफ से लेफ्ट साइड से edge 5 आ रहा है और V1 से V3 के बीच में राइट साइड से edge 4 आ रहा है. राइट. लेकिन यहाँ पे देखो तो V2 पे वही एज खुद घूम के आ रहा है. दिस इज नोन एज अ लूप. इसके बारे में बात करेंगे. दैट इज व्हाई दिस इज ओनली वन एज. यहाँ पे दो एज नहीं है. ओके. सपोज यहाँ पे एक नोड यहाँ पे लगा होता V7, तो एक एज लेफ्ट साइड से होता, एक एज राइट साइड से होता. ओके. बट देयर इज नो एज, देयर इज नो वर्टेक्स देयर. एक ही वर्टेक्स पे घूम के सेम एज आ रहा है, सेम एज वापस आ रहा है. दैट इज व्हाई दिस इज ओनली वन एज एंड दीज आर टू एजेस. कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें किसी को? जस्ट कॉमन सेंस, जस्ट पे अटेंशन. ये एज वापस घूम के इसी जगह पे आ रहा है. दैट इज व्हाई दिस इज वन एज. तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से भी एक एज है, राइट साइड से भी एक एज है. ठीक है. सो दिस इज करंट सिचुएशन ऑफ माय ग्राफ्स containing 5 edges and containing 5 vertices and 7 edges. Now the first term is adjacent node. What is known as a adjacent node? Okay. So adjacent node means simply, you know, one edge, एक edge की जो भी left और right जो भी edge connect कर रहा है, whatever vertices that edge is connecting, that vertices are known as adjacent vertices or adjacent nodes. For example, let's see E2. Let's see this E2. अगर ये मेरा E2 edge है, which two vertices it is connecting? V2 को और V4 को. Right? This E2 edge is connecting V2 and V4.
So V2 and V4 are known as adjacent nodes. They are adjacent. V2 is adjacent to V4 and V4 is adjacent to V2. Let's take E7 edge. Which two vertices E7 is connecting? V4 and V4 and V5. So V4 and V5 are known as adjacent nodes. Okay, let's take this E5. E5 is connecting V3 and V4. So V3 is adjacent to V4, V4 is adjacent to V3. Is V3 adjacent to V5? क्या V3 V5 को is V3 adjacent to V5? Is V3 adjacent to V5? क्या इन दोनों के बीच में कोई नोड है, कोई एज है? Is there any edge in between them जो इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हो? There is no edge, right? So they are not adjacent. So they are not adjacent. Okay. V1 और V3 तो adjacent है ना? तो adjacent है ना? There are two edges in fact. ये adjacent भी और ये parallel edges भी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पैरेलल वर्टिसेस कहलाते हैं. ओके, बट दे आर एडजेसेंट. अभी एडजेसेंसी की बात कर रहे हैं. सो V1 एंड V3 आर एडजेसेंट बिकॉज V1 और V3 को कोई कनेक्ट कर रहा है ना. E5 भी कनेक्ट कर रहा है और E4 भी कनेक्ट कर रहा है. तो दे आर एडजेसेंट. V1 इज एडजेसेंट टू V3 एंड V3 इज एडजेसेंट टू V1. एडजेसेंट मतलब अगल बगल रखे हैं, तभी पॉसिबल है अगर एक कोई एज है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हो. दैट्स इट. एक सिटी की दूसरी सिटी से कनेक्टेड है या नहीं, दैट्स इट. अगर कनेक्टेड है, अगर सपोज दिस इज सिटी ए, सपोज दिस इज लखनऊ, उसके बगल में कानपुर है, क्या इन दोनों को कोई रोड कनेक्ट कर रही है? कनेक्ट कर रही है तो एडजेसेंट है या नेबर्स हैं, दैट्स इट. नहीं कर रही है तो दे आर नॉट एडजेसेंट. नेक्स्ट इज अ डिग्री ऑफ अ नोड. डिग्री, व्हेनेवर आई एम सेइंग नोड, नोड का मतलब वर्टेक्स होता है. तो ट्री वाली आदत लगी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नोड एंड इट्स करेक्ट. ओके. अच्छा, एक चीज और. If you write this set of vertices here, like why I'm saying this node is, if I write set of vertices क्या है? V1, V2, V3, V4, V5, बस V5 तक है, right? This is a set of vertices. Every vertex in this set, you can call it as node, or you can call it as point, or you can call it as vertex or vertices also. It doesn't matter. तीनों ही चीजें यही signify कर रही हैं. All these three means the same. Node, point or vertex. Now degree of a node means degree of a vertex. Suppose I want to calculate the degree of vertex V1. V1 की डिग्री चाहिए, तो V1 से जितने edges निकल रहे हैं, that will be the degree of V1. How many edges are there from V1? 3. एक E5 जा रहा है, एक E4 और एक E3. So degree of V1 is 3. What is the degree of V4? How many edges are leaving V4? 1 edge, 2 edge, 3 edge. So 3. What is the degree of V2? Again 3, right? V2 से एक edge ये, एक edge ये, और ये एक ही edge है. So degree of V2 is 3. 3 है या 4 है V2 की? फिर से देखो. You have to find the कितने edges निकल रहे हैं. I'm saying कितने edges निकल रहे हैं. I'm saying you don't have to count edges निकल रहे हैं. देखो, suppose I'm standing on V2. Now you look. यहीं पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है हमेशा बच्चों को. See, if you are standing on V2, एक रास्ता V2 से इधर निकल रहा है E3 की तरफ, एक रास्ता V2 से इधर निकल रहा है E2 की तरफ, एक रास्ता V2 से इधर निकल रहा है जो कि E1 है. डेफिनेटली वही रास्ता इधर से भी है, बट रास्ते तो दो निकल रहे हैं ना. यू आर गेटिंग इट. डेफिनेटली एज एक ही है, लेकिन रास्ते दो हैं यहाँ पे. मैं E1 में यहां से भी जा सकता हूँ. दिस इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ. ग्राफ में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है अनडायरेक्टेड, एक होता है डायरेक्टेड. दिस इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब किसी भी एज पे कोई डायरेक्शन नहीं है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ. मैं V2 से E1 में यहां से भी जा सकता हूँ, मैं V2 पे E1 यहां से भी जा सकता हूँ. दोनों एक ही है, राइट? बट दोनों मुझे दो अलग अलग रास्ते दे रहे हैं. दैट इज व्हाई डिग्री ऑफ V2 विल बी 4 इन दिस केस. सपोज यही एक डायरेक्टेड ग्राफ होता, दिस वुड हैव बीन अ डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब एक डायरेक्शन होती हर एज की. ओके, सपोज यहाँ V2 से ये डायरेक्शन इधर होती, V2 से E1 की डायरेक्शन वुड हैव बीन दिस, और V2 से
एक डायरेक्शन ऐसी होती है। अब डिग्री कितनी होती है V2 की, सीधा डायरेक्शन की V2 से कितने रास्ते निकल रहे हैं, इसको लिख लो यहाँ पे। V2 से कितने रास्ते निकल रहे हैं, ये एक निकल रहा है E3 की तरफ, दूसरा निकल रहा है E1 की तरफ, सिर्फ दो ही रास्ते निकल रहे हैं, राइट। E2 V2 की तरफ आ रहा है, यहां से निकल नहीं रहा है, ओके। दैट इज वाई डायरेक्टेड की तो अभी बात नहीं कर रहे हम लोग, वी आर टॉकिंग अबाउट अनडायरेक्टेड ग्राफ्स। उसमें यू हैव टू राइट हाउ मेनी directions or how many paths or how many edges are leaving from that particular node। खाली इफ यू हैव अ समथिंग नोन एज अ लूप, ये लूप है अगर, तो इसको डिग्री में दो काउंट करना है। उसके सिवा तो सिंपली यू कैन सी नंबर ऑफ एजेस इटसेल्फ डायरेक्टली, वो भी आंसर दे देगा। फॉर एग्जांपल V5 की अगर मुझे डिग्री चाहिए तो क्या होगी डिग्री, वन, खाली एक ही E7 है, राइट। सो व्हेनेवर यू आर हैविंग लूप, तब खाली उस पर्टिकुलर नोड की डिग्री टू काउंट करनी है। Apart from that, you can simply see the number of edges also. That will work. Okay, but if you have a loop, उसको दो काउंट करना है, because here I have two paths. I can go in this direction also. I can go in this direction also. In case of undirected graphs like this. Next, क्या क्या देख लिया, adjacent node हो गया, degree of node हो गया। Next is known as a isolated node. Isolated node का मतलब है any vertex or any node having degree 0। क्या इस ग्राफ में किस कोई भी आइसोलेटेड नोड है? डिग्री 0 का तो मतलब हो गया कोई भी एज ना निकल लो, मतलब ऐसे बेचारा अकेला ऐसे पड़ा होगा कहीं। सपोज V कितने है, V6, सपोज V6 होता है ऐसे दूर कहीं अकेला पड़ा होता, एंड दिस इज नॉट कनेक्टेड टू दिस ग्राफ, देन V6 वुड हैव बीन अ आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड है मतलब अकेला है कहीं, देयर इज नो एज फ्रॉम देयर, ओके, देन दैट वुड हैव बीन आइसोलेटेड नोड। इस केस में कोई भी आइसोलेटेड नोड नहीं है। नेक्स्ट इज अ पाथ। पाथ जैसे ट्री में था, ओके, what is the direction or how many edges you have, how many nodes you have to cross to reach from one node to another। for example, suppose V1 से I want to go V5, मुझे V1 से V1 नोड से V5 नोड ट्रैवल करना है। अब इसके पाथ क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। आई कैन गो फ्रॉम V1 टू V2, V2 टू V4 एंड देन V4 टू V5। सो आई कैन गो फ्रॉम V1 टू V2, पाथ में हमेशा डायरेक्शन बनाना चाहिए। देन V2 से आई कैन गो टू V4, V4 से आई कैन गो टू V5। दिस कैन बी वन पाथ। अनदर पाथ कैन बी आई कैन गो फ्रॉम V1 टू V3, यहाँ पे V3 टू आई कैन गो V4 और V4 से आई कैन गो V5। सपोज यहाँ पे एक एज ऐसे भी होता बिटवीन V3 एंड V2, सो एक पाथ ही भी बन सकता था। आई कैन गो फ्रॉम V1 टू V3, देन फ्रॉम V3 टू V2 आई कैन गो यहाँ से यहाँ, देन V2 टू V4 आई कैन गो एंड V4 टू V5 आई कैन गो। डेफिनेटली पाथ बड़ा हो गया, वी विल नॉट कंसीडर, इट्स नॉट अ गुड पाथ, बट दिस इज ऑप्शन, ओके। दिस वाज पाथ। साइकिल, व्हाट इज अ साइकिल? साइकिल मींस इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स, घूम फिर के उसी वर्टेक्स पे वापस आ जाओ, दैट इज नोन एज अ साइकिल। दिस इज नॉट अ साइकिल, ये V2 वाला साइकिल नहीं, ये लूप होता है। साइकिल का मतलब है, सपोज आई स्टार्ट फ्रॉम V1, I go to V2, then I go to V4, then I go to V3, then I again come back to V1। मतलब starting vertex and the last vertex in a path are same, वो होता है cycle। Starting vertex and the last vertex are same, that is known as a cycle, okay। V1 से I go to V3, again I come back to V1, this is also a cycle। V1 से I go to V3, V3 से I come back to V1, the first and the last vertex are same in a path, that is why this is a cycle। और कोई साइकिल पॉसिबल? हाउ मेनी साइकिल्स यू हैव इन दिस ग्राफ? हाउ मेनी साइकिल्स यू हैव इन दिस ग्राफ? एक तो ये है V1 से V3 जाओ, V3 से वापस V1 आओ, दिस इज वन साइकिल। दूसरी साइकिल क्या है? V1 से यू गो टू V2, V2 से यू गो टू V4, V4 से यू गो टू V3, V3 से अगेन यू कम बैक टू V1, ये पाथ, ये भी साइकिल है। और कोई साइकिल है? नो, टू साइकिल्स ओनली, राइट। सपोज एक पाथ यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होता है,
v2 is a loop only. V2 is a loop only. V2 is a loop only. Right? Now suppose I have a connection like this also, V2 और V5 के बीच में. अब कितने साइकिल्स हैं? अब एक साइकिल ये भी है, V1 to V2 to V5 then V4 then V3 then V1. तीन नहीं है, चार होंगी. तीसरी साइकिल ये हो जाएगी, V1 से V2 to V5 to V4 to V3 to V1. ये पूरा पाथ ऐसे लेके चौथी साइकिल ये हो जाएगी, V2 to V5 to V4 to V2. ये वाला पाथ. This is also cycle. Okay. So this was regarding cycles. Next is loop. Okay. Loop जैसे कि दिख ही रहा है, अगर वन एज इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन वर्टेक्स और उसी वर्टेक्स पे वो एज वापस घूम के आ जाए, it will be known as a loop. If a edge starts from one vertex and comes back to that same vertex only, उसी पे वापस घूम के आ जाए तो वो लूप होता है, जो कि ऐसा दिखता है. ओके. लूप में हमेशा फर्क क्या पड़ता है, जब भी लूप हो गई थी इसकी डिग्री 2 काउंट हो गई. सो डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स 2 will be counted as 2 instead of 1. That is the effect of a loop on the graph. वो डिग्री बढ़ा देता है सीधे, क्योंकि रास्ते बढ़ जाते हैं, सिंपली ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. लास्ट इज पैरेलल एज. ओके. पैरेलल एज का मतलब है, इफ यू हैव टू वर्टेक्स लाइक v1 एंड v3, क्या दो वर्टेक्स को एक से ज्यादा एजेस कनेक्ट कर रहे हैं, then these two vertices are known as parallel edges. So क्या v1 और v3 को एक से ज्यादा एजेस कनेक्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं, राइट. सो e5 एंड e4. ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, but just for understanding. So these are some of the terminologies which you are going to use, especially this nodes, that is vertex, degree, path, cycle. Okay, these are some of the things that we'll be using in future classes. Okay, so we'll meet tomorrow and we'll do the rest of the things. Thank you.